So now if you talk about the banded constituents of coal, before that we will see, as you have requested, about the Telangana. Okay, Telangana state, what type of coal is found and what is uh, which type which period coal is found in the Telangana state. Okay, so I will just give a glimpse of that thing, but if you want, if you want the complete video regarding or on the basis of the type of coal found in the Telangana state. Along with that, every and each and every information about the SCCL, that is the general awareness of the SCCL. Along with that, the annual report of the SCCL, then I could provide that also to you. Okay, but if you want, then only I will provide all these things, otherwise it is not required, but I will. Okay, अब देखिए SCCL का मैं आज जो भी है आपका तेलंगाना का, उसका मैं आपको छोटा सा एक पोर्शन ही बताऊंगा। अगर आपको जरूरत होगा आगे, आपको लगता है कि हाँ जरूरी है, तो मैं करवा दूंगा उसको। एनुअल रिपोर्ट वगैरह आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसका एक अलग चीज लेक्चर ही ले लेंगे अपन, एनुअल रिपोर्ट वगैरह का, तो पूरा डिटेल एक बार में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। गोदावरी कोलफील्ड्स, basically Godavari coalfields is located in the districts of Adilabad, Karimnagar, Khamman, Warangal, Indian state of Telangana, and in the Indian state of Telangana. Okay, in Telangana state, this Godavari coalfields is present in Adilabad, Karimnagar, Khamman, and the Warangal. Okay, and it is the only coal field that lies in the South India. Basically it lies in the Godavari river. This lies in the basin of the Godavari river. आपका गोदावरी कोलफील्ड्स जो है, तो आपका जो तेलंगाना स्टेट है हमारे इंडिया का, वहां पर आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मन और वारंगल जैसी जगहों पर पाया जाता है। बेसिकली गोदावरी वैली कोलफील्ड्स, जो कि एक गोदावरी रिवर के बेसिन में पाया जाता है। ओके, एंड जो गोदावरी वैली के कोलफील्ड्स की जो एक्टिविटीज है वो कहाँ तक है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, करीमनगर, खम्मन और वारंगल, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है आपके तेलंगाना के, जहां पर आपका गोदावरी वैली कोलफील्ड जो है तो एक्सटेंडेड है, जहां पर आपका कोयला निकाला जाता है। ठीक है, गोदावरी वैली कोलफील्ड को कभी कभी प्राणहिता गोदावरी वैली कोलफील्ड के नाम से भी बुलाया जाता है। ओके, जो कि आपका जो प्राणहिता गोदावरी वैली कोलफील्ड है वो किसका कंटिन्यूएशन है, मतलब इंडिया, आपका इंडिया में ये आता है महाराष्ट्र साइड से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इससे होते हुए, तो यहाँ पर ये जो है तो ये वर्धा वैली कोलफील्ड से जुड़ा हुआ है, उसका एक कंटिन्यूएशन है, उसका एक पार्ट है, जो कि आपका तेलंगाना में एंटर करते ही, जिसे हम प्राणहिता गोदावरी वैली कोलफील्ड के नाम से जानते हैं। वहीं पर दूसरे स्टेट में इसे वर्धा वैली कोलफील्ड का ही एक पार्ट है, जो कि वहां पे बहुत बड़ा एक्सटेंट है उसका। ठीक है, अब गोदावरी वैली कोलफील्ड को टोटल 12 कोल बेल्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इनके जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है, अब इस कोलफील्ड के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं, तंदूर कोलफील्ड, नॉर्थ गोदावरी एंड साउथ गोदावरी कोलफील्ड, करलापल्ली एंड कमारन कोलफील्ड एंड रामागुंडम कोलफील्ड एक्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोलफील्ड्स हैं जो कि गोदावरी वैली कोलफील्ड में पाए जाते हैं। एंड एज यू कैन सी ओवर हियर, Godavari Valley coalfield is also referred to as Pranhita Godavari Valley coalfield. Basically, it is a continuation or it is a part of the Vardha Valley coalfield in other states. Okay, which is present in other states also. The Godavari Valley coalfield is divided into the 12 coal belts
And if we talk about the different areas of this coal field which are very important are the Tandur coal fields, that is, and next is the North Godavari and the South Godavari coal field, Karla Palli and the Kamaran coal field, Ramagundam coal field, etc. Now, as we were talking about the banded constituents of the coal, if we talk about the banded constituents of the coal, then there are four bands which are visible in the coal, that is the vitrine, clearine, durine, and the fusain. Basically, these are the types of the rocks, and it does not designate, the banded constituent does not designate it is a chemical entity. Okay, it is not a type of a chemical entity, or it is not a type of a chemical, but it is a type of a rock. Okay, but each and every banded bands have different chemical compositions. Okay, like vitrine has different chemical compositions. Okay, and on the basis of that chemical compositions, they are subdivided into vitrinite. It is subdivided into vitrinite, fusinite, exenite, resinite, and micrinite. Okay, and this subdivision is also known as, it is very important, just note it down, it is also known as Macerals or petrological units. Okay, this subdivision is also known as Macerals and petrological units. Just write it down. आपका बैंडेड कंस्टिट्यूएंट्स की अगर मैं कोयले की बात करूं तो आपके जो विजिबल बैंड्स है कोयले में वो है विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन एंड फ्यूजेन। आपका ये एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि अलग अलग शेप में इसमें दिखाई देते हैं अगर हमें पत्थर में, तो उसके बेसिस पे हमने डिवीजन किया हुआ है कोयले का। अब ये एक प्रकार का टाइप है रॉक का, पत्थर का टाइप है, ना कि किसी प्रकार का केमिकल है। अगर मैं केमिकल्स की बात करूं तो विट्रेन ही एक ऐसा है जिसके अलग अलग विट्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप में विट्रेन भी अलग अलग शेप में आता है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, जिसका अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, इसीलिए उसको इस रॉक टाइप को, विट्रेन रॉक टाइप को जो है तो कुछ सब डिविजन्स दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, जिसे क्या कहा जाता है, मैसरल्स या फिर पेट्रोलॉजिकल यूनिट्स। ये जो सब डिविजन किया गया है ना, इसको क्या बोलते हैं, मैसरल्स एंड पेट्रोलॉजिकल यूनिट्स, जैसे कि विट्रिनाइट, फ्यूजनाइट, एक्सिनाइट, रेजिनाइट एंड मिक्रिनाइट। ना अब जितने भी बैंड्स होते हैं, सारे के सारे बैंड एक ही कोल में कभी भी, एक ही कोल सैंपल में कभी भी नहीं पाए जाते हैं। जनरली ऐसा पाया गया है कि दो बैंड्स तो एक ही टाइप के सैंपल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर विट्रेन को की बात करें तो कैसे पहचानेंगे कि किसी भी रॉक का जो क्या बोल सकते हैं कोई भी रॉक में विट्रेन बैंडेड है कि नहीं, तो वो हमेशा ब्राइट लेयर्स में होता है, ग्लासी टेक्सचर शो करता है। ये ज्यादातर हाई क्वालिटी कोल में पाया जाता है, फ्राइबल होता है एंड स्मॉल क्यूब्स में और रेक्टेंगुलर पीसेस में ये ब्रेक हो जाता है, और इसको छूने पर हमें चिकना फील होता है, एकदम क्लीन फील होता है, मतलब इट इज क्लीन टू टच। जब आप उसको छुएंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, किसी प्रकार का काला काला जो कोयले को छूने पे लग जाता है ना, इसमें इस केस में नहीं लगता है अगर विट्रेन है तो। If we talk about the vitrine, okay, generally all four bands are not found in a same sample of the coal. Only it is found that only two types of bands are found, maximum two types of bands are found in a particular sample of the coal. If we talk about the vitrine, how we will identify that vitrine, it is a vitrine type of coal or a fusane or a durine type of coal, then it is given the characteristics of all the banded constituents are given over here. Like if we talk about the vitrine, then it forms a bright layers. Basically it is because if it is forming a bright layers, that means it is found in the high quality coal, and it shows a glassy texture, it is friable, and when we use to break it, then it will break in the form of small cubes or in the rectangular pieces. And the most important, that is when we used to touch a coal, then our hands get black in color, but in case of vitrine our hands will remain
Now, if we talk about the chlorine, durane, and the fusen, chlorine, it is also in bright colors. It is parallel to the bedding plane. It does not soil the fingers. It resembles vitrine. It is present in high quality coal. If we talk about the chlorine, it is also present in the high quality coal. That's why it does not soil the fingers. It will not show any type of color on your fingers when you used to touch it. Okay, and the most important, it is parallel to the bedding plane. From here question can be made very easily. Okay, अगर मैं क्लेरेन की बात करूं तो ये ब्राइट लेयर्स में होता है, हाई क्वालिटी कोल में दैट मींस में ये पाया जाता है, ये विट्रेन की तरह ही होता है, इट इज लाइक विट्रेल और विट्रेन ओनली. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन बनता है कि जो भी बेडिंग प्लेन होता है उसी के जस्ट पैरेलल आपका विट्रेन का क्लेरेन का फॉर्मेशन होता है. ड्यूरेन की अगर बात करें तो ऐसे कोल जिनका अपीयरेंस कैसा होता है, डल अपीयरेंस होता है, ठीक है, और लेंटिकुलर शेप में होते हैं और हार्ड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेन बोलते हैं, है ना. द coal having dull appearance, lenticular in shape and hard are called durane and durane banded constituents and the fusen. अगर आपके कोयले में डल अपीयरेंस है, फ्राइबल है, उसमें अगर छूने पर आपका हाथ काला हो जाता है या मोस्ट, ये बेसिकली सबसे मोस्ट इम्प्योर बैंड होता है कोयले का, ठीक है, और ये बेसिकली चारकोल में अपने को देखने को मिलता है. ओके, और ये हर एक टाइप के कोल में मौजूद होता है. फ्यूजन is present in each and every type of coal. Okay, basically it shows dull appearance because whether it is high quality coal or the low quality coal, it is present in each and every type of the coal. Okay, now if we talk about the coal analysis and the commercial grades. Okay, now size gradation of the coal. On the basis of the size, coal is divided into different types, that is the steam coal, rubble coal, and the slag coal. Okay, if the size of the coal is basically after blasting or whatever, if the size of the coal is 50 mm to 200 mm, then it is coal known as the steam coal. And if the size of the coal is 25 mm to 50 mm, then it is called the rubble coal. And if the size of the coal is 0 mm to 25 mm, then it is called the slag coal. अब देखिए साइज के बेसिस पे कोयले को जो है तो अलग अलग नाम दिया गया है कि अगर 50 mm से 200 mm के बीच का अगर कोयले का साइज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम कोल बोलते हैं. अगर 25 mm से 50 mm तक कोल का साइज है तो उसे हम रुबल कोल बोलते हैं, और अगर 0 से 25 mm कोल का साइज है तो उसको हम स्लैग कोल बोलते हैं. रन ऑफ माइन कोल, बेसिकली जो भी जितना भी अनस्क्रीन्ड कोल होता है, इफ यू आर नॉट बेसिकली अगर आपने साइज ग्रेडेशन नहीं किया है या अलग अलग साइजेस में कोयले को डिवाइड नहीं किया है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ माइन कोल बोलते हैं. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द रन ऑफ माइन कोल, if you are not going to divide the coal on the basis of the size, or basically if I say if you are not dividing the coal on the by after screening on the basis of the size, then that unscreened coal is called the run of mine coal. Okay, basically if they talk about the quality of the coal, then it depends on the basic it depends on the chemical composition of the original plant, that how that plant is made, or what was the chemical composition of that plant from which the coal has been made. Okay, the second thing on which the quality of the coal depends is basically the mode of accumulation and the burial of the plant of the debris, plant and debris. Okay, plant debris. The last is the next is the inorganic matter that has got mixed with the plant material, and the extent of the decay, for the what time period the coal has decayed, and up to what extent it has got decayed, and the age of the deposit, what was the time period for which this deposit has took place to become a coal. Okay, and the geological disturbances. Okay, and on all these things the quality of the coal depends. Okay, आपकी कोयले की क्वालिटी कुछ चीजों पर डिपेंड करती है कि सबसे पहले जो प्लांट था जिससे कि आपकी कोयला बना है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या था, दूसरा आपका कोयला किस प्रकार से निकल रहा है और वो प्लांट किस प्रकार से जमीन में गड़ा था, और इनऑर्गेनिक मैटर जो भी आपके प्लांट का जो भी मटेरियल था उसके साथ कितना इनऑर्गेनिक मैटर आपका मिक्स हुआ, आपका कितने हद तक जो कोयला है वो डिके हुआ है, सड़ा है, कितने सालों तक, एज ऑफ डिपॉजिट मतलब कितने सालों का पुराना डिपॉजिट है, उस पर डिपेंड करता है कोयले क्वालिटी, और जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस पर भी कोयले क्वालिटी डिपेंड करती है.
Yeah, basically these you may call them a dirt bands. Okay. Analysis of coal. If you want to do the analysis of the coal, then the coal can be analyzed by two methods. First is the ultimate analysis, and the another one is proximate analysis. So you have to remember this thing, that basically ultimate analysis gives you the percentage of the elements which are present in the coal. Elements means oxygen, nitrogen, hydrogen, sulfur, phosphorus. While on the other hand, proximate analysis gives you the percentage of the contents of the coal. Okay, not the elements present in the coal. It gives about the percentage of the contents which are present in the coal, like the ash, moisture, volatile matter, and the fixed carbon, of which that particular rock is made. Okay, it does not talk about the elements. Okay, basically by this information, with the help of ultimate analysis, we can check out the suitability of the coal, whether it can be used in the chemical industry, whether it can be used for the chemical industry purposes or not. On the other hand, with the help of proximate analysis, we can find out that whether it can to which places it can be used, like whether it is beneficial to use in the iron and the steel industry, whether it is useful to use it in the thermal power plants. If we use in the thermal power plants, then it will whether it will harm the environment or not. Such kind of informations we used to get by the proximate analysis. Okay, तो हमारा अल्टीमेट, अब अगर मैं एनालिसिस की बात करूं कोयले की, तो दो तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है, अल्टीमेट और प्रोक्सिमेट एनालिसिस। बेसिकली अल्टीमेट एनालिसिस हमें क्या बताता है कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। संसार में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, कि कोयले में कितना ऐश है, मतलब किस किस चीज से मिलकर वो कोयला बना है, जो कि उसके एलिमेंट्स नहीं है, एक प्रकार के एलिमेंट नहीं, इंप्योरिटीज से, कौन कौन सी इंप्योरिटीज से, या कितना कार्बन से कोयला मिलकर बना है, इंप्योरिटीज टू कार्बन वगैरह के बारे में अगर मुझे जानना है, तो वो चीज आपका क्या बताता है, प्रोक्सिमेट एनालिसिस बताता है। भाई इसमें इतना ऐश है, इसमें इतना मॉइस्चर, इसमें इतना वोलेटाइल मैटर है, फिक्स्ड कार्बन इतना है। तो बेसिकली ये आपका परसेंटेज बाय वेट देता है। ये आपका ये बताता है कि कोयले का इस्तेमाल आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर इसका कोयले का इस्तेमाल आप जो है तो थर्मल पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कितना ऐश प्रोड्यूस होगा, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल तो नहीं होगा, ये सारी जानकारियां। लेकिन वहीं पे अल्टीमेट एनालिसिस से हमें पता चलता है कि क्या हम इसको केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये सारी जानकारियां हमें अल्टीमेट एनालिसिस से मिलती है। चलिए अब एक एक करके हम जितने भी इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कोयले के, उन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आता है ऐश। ऐश बोले तो कहां नाम सुने हो, किसका नाम था ऐश? आज गला खराब है यार, चिल्लाते भी नहीं बन रहा है। अब सही है थोड़ा सा। ऐश किसका नाम था, चलो बताते रहना। ठीक है, ये वो वाला ऐश है, राख, the residue that we get after burning of the coal or the wood is called ash. हे बच्चे बड़े हो गए यार। क्या नाम है? विश्वजीत। ओके, I'm remembering there is a student Vishwajit. Last time he got selected in which exam? He was also a very sincere person like you only. He also got selected in one of the subsidiaries of Coal India. I don't remember. Very talented boy. Always used to attend the classes. Whatever, how many times I've used to take the class, he used to come over there and discusses each and everything, just revises again and again and again and again each and everything. Even after he has joined NCL, I think he has joined the NCL. After joining the NCL or WCL, whether I don't remember exactly,
Even after that also, he used to come and attend my class. After that also. So Ash was in Pokemon. If anyone has seen, then they would have remembered it. The Pokemon. ठीक है, पोकेमोन में था यार एश। चल चलिए, तो अगर मैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो सबसे पहले ऐश आता है। ऐश क्या होता है? ये एक प्रकार का रेसिड्यू है जो कि कोयले को या कोक को जलाने के बाद बचता है। ठीक है, अगर कोयले को या कोक को हवा में जला देते हो, हवा मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, अगर आप जलाते हैं तो उसके बाद हमें हवा में ऐसा नहीं करना है कि ऐसे जला के ऐसे फेंक देना, नहीं भाई, उसको जला दो, हवा मौजूद है वहां पे जला दो, तो आपका जो है तो क्या मिलता है, हमें ऐश मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरा, okay, now if we talk about the ash, basically it is a type of inorganic residue, okay, which is left if we we used to get after burning the coal in the presence of the air, okay. If we talk about the moisture, अगर moisture की बात करें तो basically जो पानी मौजूद होता है ना, whatever the content quantity of water is present inside the coal in various forms, then when it gets converted into vapors, or it gets evaporated on heating the coal, or comes out of the coal on heating, then that is known as moisture, okay. आपका कोयले में से जो पानी निकलता है उसको हीट करने पर उसे क्या कहा जाता है? मॉइस्चर कहा जाता है। वॉलेटाइल मैटर क्या होता है? तो वॉट एवर द गैसेस विच आर इनफ्लेमेबल गैसेस और बेसिकली द फ्लेमेबल गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द इनसाइड द कोल आर कॉल्ड द वॉलेटाइल मैटर। जो आपकी गैसेस कोयले में मौजूद होती, जो कि चल सकती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मैटर कहते हैं। अब अगर आपको वॉलेटाइल मैटर कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वॉलेटाइल मैटर, then you can calculate it by total loss in the weight minus moisture when coal or coke is heated, ठीक है। by this formula you can calculate the volatile matter. If we talk about the fixed carbon, okay, for calculating the fixed carbon, just take that the combined quantity of the carbon plus other constituents or the contents which are present in the coal, they are equal to, just suppose that if they are equal to 100, then you have to just subtract 100 from okay, no, subtract 100 by the sum of the percentage of the moisture, ash and the volatile matter present in the coal, ठीक है। अगर आपको फिक्स्ड कार्बन लेना है तो 100 में आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? मॉइस्चर, एश और वोलेटाइल मैटर का जो भी परसेंटेज होता है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्री मॉइस्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, अब फ्री मॉइस्चर क्या होता है? ऐसा पानी जो कोयले के सरफेस पर मौजूद होता है, जो कि हमें दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं क्या? फ्री मॉइस्चर। What is free moisture? The water which is present on the surface of the coal and it is visible to us, then that is known as the free moisture, okay. If we talk about the inherent moisture, जो कोयले के अंदर मौजूद हो उसे inherent moisture, the water which is present inside the coal, that is inherent moisture. Now if we talk about the total moisture, then the sum of the free moisture and the inherent moisture is called the total moisture of the coal. So simple it is, as simple as it is. Now if we talk about the proximate analysis, basically it gives the inherent percentage of inherent moisture. Four different methods of proximate analysis. There are four different methods of the proximate analysis, that is analysis on as received sample basis. Basically as you receive the sample, on the basis of that, if you do the analysis, then it is called the an analysis on as received sample basis, okay. After if you are taking the whatever sample you have received, in the same manner you have kept it in the laboratory and you have just done the analysis, that is called the as received sample, okay, basis.
Next is the air dried sample basis. That means you have got the sample, after that you have dried the sample, then after that you have done the analysis. That is called analysis on air dried sample basis. Next is the analysis on equilibrated conditions basis. Okay. Similarly, analysis on unit coal basis or dry mineral matter free basis or pure coal basis. We will look various methods of analysis of the approximate analysis method. Okay, one by one, then you will understand easily. एनालिसिस ऑन एज रिसीव्ड सैंपल. अब देखिए आपका जो एनालिसिस की बात करूं, ठीक है, कोयले की जो एनालिसिस की बात करूं, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की, तो बेसिकली आपका जो मॉइस्चर कोयले के अंदर मौजूद होता है, जो पानी कोयले के अंदर मौजूद होता है, उसके बारे में ये हमें परसेंटेज देता है. अब इसका एनालिसिस चार तरीके से किया जाता है. एक तो सैंपल जैसे ही रिसीव हो उसी हालात में उसको एनालिसिस कर दिया, ठीक है. दूसरा आपका उसको सुखा के एनालिसिस किया. तीसरा आपका इक्विलिब्रेटेड कंडीशन में डालने के बाद एनालिसिस किया. चौथा आपका एक कोल का छोटा सा यूनिट लिया, ठीक है, और उसके बेसिस पर हमने जो है तो पता कर लिया कि ये मेरा प्योर कोल है कि नहीं है. इस टाइप का एनालिसिस करना क्या कहलाता है? आपका एनालिसिस ऑन यूनिट कोल बेसिस और ड्राई मिनरल मैटर फ्री बेसिस और प्योर कोल बेसिस. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द एनालिसिस ऑन एज रिसीव्ड सैंपल. अब हमें सबसे पहले बात करनी है कि जैसे ही सैंपल आता है उसके बाद जो हम एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पर कैसे एनालिसिस किया जाता है. ये जो है तो एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, मतलब इसको ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि कोयले के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको एक छोटे से कंटेनर में सील किया जाता है ताकि उसमें से मॉइस्चर जो है तो बाहर ना जाने पाए, ठीक है. और दूसरा आपका कोयला बाहर जाएगा मॉइस्चर तो जाहिर सी बात है कोयला सूख जाएगा, तो कोयला सूखने ना पाए जब तक कि हम उसे लैब तक ना पहुंचा दे, ठीक है. तो सैंपल जैसे ही मिला वैसा का वैसा सेम सैंपल हमारा टारगेट होता है कि लैब में हम पहुंचा दे. ये क्या कहलाता है? एनालिसिस ऑन एज रिसीव्ड सैंपल. ओके, अच्छा, अब कुछ पावर हाउसेस जो है तो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये वाला उनको एनालिसिस बहुत पसंद है. इसका कारण क्या है कि देखिए अगर मैं कोयले का एनालिसिस करवाऊं, ठीक है, मैंने क्या किया, कोयला लाया, कोयले का सैंपल लिया और उसको ले जाके सुखा दिया. सुखाने के बाद फिर मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूं कि भाई कितना कार्बन है, क्या है, सल्फर, फास्फोरस, मॉइस्चर वॉइस्चर सब कुछ, ठीक है. तो ये चीज तो एग्जैक्ट डाटा नहीं हुआ ना. ओके, if we say that what is the what do you mean by analysis on as received sample? Basically in this the coal samples are collected and they are sealed in a container so that the moisture should not go out of that coal and they should not get dried, okay, until and unless they reach to the destination point where they have to be analyzed. Basically you are analyzing a coal which is present in a field. Okay, basically what you are doing, you are analyzing such coal which is present exactly as it is in field. Such type of coal sample is being analyzed over there. Okay, it does not change, there is no change in that sample. Okay, that sample will particularly represent the exactness of that coal which is present in the mines. Okay, exact details. So that's why this is the reason why most of the powerhouses wanted only this type of analysis, because they will get the exact details of the coals which is present in the field. Because the when the coal is transported from the field, it absorbs a large quantity of moisture or it absorbs a large quantity of water while transportation. Okay, and that is very not good for the thermal power plants because they have to work very hard for heating it or to burn it. Okay, so they want the real coal, they want to know the real coal and the external moisture adhering to it, so that payment is made only for the coal to the suppliers. Okay, now air dried sample. दिस इज द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड, सबसे कॉमनली यूज होने वाला मेथड है, प्रैक्टिस है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम
कोयले के सैंपल को माइन से कलेक्ट करते हैं, उसको उसके बाद उसको जो है तो छोटे छोटे टुकड़े करके उसको जो है तो जमीन पे उस पे किसी भी एक थिन लेयर्स में उसको जो है तो स्प्रेड कर दिया जाता है। थिन लेयर्स में उसको जो है तो लेबोरेटरी में स्प्रेड कर दिया जाता है, ऐसे बिछा दिया जाता है ताकि वो सूख सके। ठीक है, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद जो है तो उसके वेट को जब तक उसका वेट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तब तक के लिए उसको हम वहां पे छोड़कर रखते हैं। अब a sample which is spread in thin layers in a laboratory for 6 to 10 hours and air allowed to pass over it and laboratory temperature and humidity also attains the constant weight and is treated as an air dried sample। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कहानी सुनिएगा। कि कोयले का एक सैंपल लिया, उसके पतले शीट्स में एकदम पतला पतला करके उसको ऐसे बिछा दिया गया लेबोरेटरी में, हवा में एकदम, ठीक है, ताकि वो सूख जाए। अब तब तक सुखाया जाता है, इतने दिनों तक सुखाया जाता है कि जब तक कि उसका जो वेट है, उसका जो वजन है वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, जितना था उतना ही रहा है। ऐसा मानना है इनका, जो लेबोरेटरी के लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि आपका जो कोयले का सैंपल हम सुखा रहे हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम लेबोरेटरी में जो भी मॉइस्चर अवेलेबल है, जो भी हवा अवेलेबल है, ठीक है, जो भी ह्यूमिडिटी है, जो भी टेम्परेचर है, उसके कारण वो सेम ही रहता है। 6 से 10 घंटे के बीच में वो सेम ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए उसको मैं एक एयर ड्राइड सैंपल के नाम से ट्रीट कर सकता हूं। ठीक है, if we talk about the story about running over here, is that we used to take a sample of the coal, and after that we used to just make it make thin layers of it in the laboratory, so that under the atmosphere, uh, open atmosphere, so that it could get dried up. Okay, if you want, if you are thinking that this type of coal will give a variable analysis, or it will give a variable analysis of the moisture percentage, or the moisture percentage will be changed, then the scientist or the laboratory or the persons which are present in the laboratory, they used to say that it does not affect the coal or the contents of the coal or the percentage of the moisture, because the moisture which is present in the atmosphere, that also gets absorbed by the coal. Okay, so it does not affect the coal that much, or it will make the coal to remain to have a constant weight, and that's why it is treated as an air dried sample। अब यहाँ पे बोलता है कि जब आपको लार्ज क्वांटिटी में बहुत सारे सैंपल्स को एनालिसिस करना है, तो उसके लिए एक बहुत ही क्विकर मेथड है एयर ड्राइड सैंपल पाने के लिए, कि आप लेबोरेटरी में सैंपल को एक ओवन में डाल के उसको हीट कर दीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको उस टेम्परेचर पर कम से कम 1.5 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। if you have to do the analysis of more large number of samples, then in that case, if you want to get an air dried sample in a very quick manner, then there is a quicker method, that you should place that sample inside the oven at 50 degrees Celsius and keep it at that temperature for 1.5 to 3 hours, then you will get the air dried sample। Now the difference in the air dried sample and the as received sample is that in the as received sample, the free moisture content can be calculated, but in the air dried sample, free moisture content cannot be calculated, because the external moisture which is present on the surface of the coal, it gets dried up, and the time depending upon the relative humidity। Okay, now analysis on equilibrated conditions। okay, अब equilibrated conditions में हमें analysis करना है, तो यहाँ पर बोलता है कि आपका ये जो इक्विलिब्रेटेड कंडीशंस वाला एनालिसिस होता है, ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक, मोर साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो कोयले का सैंपल है उसको एनालिसिस के लिए एक IS-20 सीव से पास किया जाता है। ठीक है, उससे पास किया जाता है। ठीक है, उसके इक्विलिब्रेटिंग करने के बाद
जिसमें कि उसको लगभग 48 घंटे तक रखा जाता है, ऐसी जगह पर उसको रखा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है कि IS-20 नामक सीव, व्हाट डू यू मीन बाय सीव? सॉरी गाइस, थोड़ा कॉल आ गया था जिसके कारण आपका डिस्टरबेंस हुआ। ओके, हाँ, तो मैंने कहा था अपन सीव, सीव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीव? सीव का मतलब होता है चलनी, सीव का मतलब होता है चलनी, चलनी। It is a type of you can say that a type of mesh or net which is used to separate the solid from the liquid. Basically, it is used in the kitchen set for separating the tea leaves from the liquid tea. Okay, basically, so they are passed from the IS-20 sieve, sieve basically after the equilibrating, after equilibrating it. Okay, what is the equilibrating condition? That is, the sample is kept inside a container which for 48 hours. Okay, under the atmospheric temperature, the atmospheric temperature of that container is 40 degrees Celsius plus minus 2 degrees Celsius. 2, and the relative humidity is 60% plus minus 2%. Only some laboratories are equipped with the chambers. Okay, that is the chamber container, or we can say that container can also be said as the chamber. And in that equilibrating condition, our sample is kept for 48 hours. This what does this analysis provides? This analysis provides basically the uniform basis for comparison of the coals from the different parts of the country. Okay, with the help of this analysis you can compare a coal from the coal of different parts of the countries in at the local temperature, and the relative humidity does not affect the, and in this kind of analysis the relative humidity will not affect the percentage of the moisture present in the coal. Okay, चलिए अब इसमें क्या होता है कि आपका जो एनालिसिस है, ठीक है, ये इक्विलिब्रेटेड कंडीशन का जो एनालिसिस है, इसमें क्या किया जाता है कि सिंपल सी भाषा में अगर बोलूं कि आपका एक कोयले का सैंपल लिया, उसको ले जाके सीधे सीधे एक छोटे से चैम्बर में रख दिया, जहां पे टेम्परेचर जो है तो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है 60% प्लस माइनस 2%। ठीक है, इस कंडीशन में एक पर्टिकुलर चैम्बर में आपका जो है तो कोयले का सैंपल रखा रहता है, उसके बाद उसको एक चलनी से पास कराकर हम उस कोयले के सैंपल का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये रखने का बेसिकली जो तरीका होता है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रेटेड कंडीशन। ओके, इक्विलिब्रेटेड कंडीशन में लगभग 48 घंटों तक रखा जाता है। ठीक है, आफ्टर उसके बाद एनालिसिस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रेटेड कंडीशन पर एनालिसिस करना। ओके, सो इन शॉर्ट एज यू अंडरस्टैंड दैट what does equilibrated condition analysis means? That a coal sample is taken and kept into a chamber under this atmospheric temperature and relative humidity under these conditions for 48 hours, and after that it has been sampled, it has been analyzed, then that condition is called as analysis on equilibrated conditions. Okay, now unit coal basis analysis. So this type of analysis will give you the ranks of different coals. Okay, ये जो एनालिसिस है आपको कोल के रैंक्स के बारे में बताता है। ये बेसिकली ये बताता है कि आपके कोयले का जो सब्सटेंस है वो किस नेचर का है, प्योर कंबस्टिबल है या फिर ऑर्गेनिक पार्ट है कोयले में किसी प्रकार का।
ठीक है, कार्बन कंटेंट कितना है, वॉलेटाइल मैटर कितना है, ये सारी जानकारियां इस एनालिसिस से मिलती हैं। ठीक है, अब चूंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो मॉइस्चर होता है और जो ऐश होता है वो आपके कोयले को गर्म करने में मदद नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि वॉलेटाइल मैटर हो गया, वॉलेटाइल मैटर अगर मौजूद है, मान लीजिए कोई भी गैस अगर कोयले में मौजूद है तो जाहिर सी बात है वो भगभगा के कोयले को जला देगी। ठीक है, इफ एनी टाइप ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन द कोल दैट इज द वॉलेटाइल मैटर, देन इट विल भगभगा के जला देगी, इट विल बर्न योर कोल अ वेरी फास्ट रेट। Okay, but on the other hand, the moisture and the ash which is present in the coal, they will not help in the burning the coal. They will not help the coal to produce the heat. On the other hand, volatile matter will help to produce the heat. Okay, so they does not contribute to the heating capacity of the coal. So in this analysis only, the volatile matter and the fixed carbon आर रिपोर्टेड एज परसेंटेजेस ऑफ द कोल सब्सटेंस। ठीक है, और इसी एनालिसिस से हम वोलेटाइल मैटर और जो आपका फिक्स्ड कार्बन है किसी भी कोल सैंपल में, उनको जो है तो कोल सब्सटेंस में परसेंटेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एज इट इज रिप्रेजेंटेड इन द परसेंटेज फॉर्म। ओके, दिस इज योर चैम्बर bomb calorimeter in which the coal is placed. Now, if we talk about the grades of the coking and non-coking coal, okay, so our Coal India Limited, since the Coal India Limited provides or the we can say the Indian coal is marketed or commercially it is marketed or sold in the market according to the grade, or we can use also say that the prices of the coal depends on the quality of the coal, that is the grades of the कोल। जो कोयले के प्राइसेस होते हैं या जो मार्केट में कोयला बेचा जाता है वो क्वालिटी और उस या फिर यूं कहें कि उसके ग्रेड के बेसिस पर बेचा जाता है। ठीक है, क्वालिटी बेसिकली द ग्रेड मींस द क्वालिटी ऑफ द कोल। ओके, अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेट फिक्स किए, चूंकि पूरे कोयले का जो पूरे देश का कोयला है वो तो सरकार का है, भारत सरकार का है। अब भारत सरकार ने रेट फिक्स कर दिए, सिंस द ऑल द कोल व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर इंडिया, it is the basically under the government of India. Okay, because nationalization of the coal has already been done, that's why government of India has fixed the prices for different quality of coal, or we can say that for different grades of the coal. Okay, so on what basis, the first question arises over here, on what basis they have done the gradation of the coal? They have done the gradation of the coal on the useful heat value. Okay, they have done, the government of India has done the gradation of the coal they on the basis of the useful heat value. Okay, which is calculated by the help with the help of proximate analysis, and this gradation is for the non coking coal. Okay, अब आपका किस बेसिस पर जो है तो ग्रेडेशन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ग्रेडेशन किया गया है यूजफुल हीट वैल्यू के बेसिस पर किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉन कोकिंग कोल के लिए किया गया है। और किस एनालिसिस की मदद से किया गया है? प्रोक्सिमेट एनालिसिस की मदद से किया गया है। तो तीन क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, 3 क्वेश्चंस कैन बी मेड ओवर दिस लाइन और विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, बाय दिस लाइन। ओके, नाउ द कैलोरीफिक वैल्यू, जो कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू है या फिर किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू लेबोरेटरी में डिटरमाइन किया जा सकता है, किसके अंदर? बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर। लेकिन कोयले के केस में क्या होता है, ठीक है, उसको जो है तो हम एक और जगह पर कैलकुलेट कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से? अल्टीमेट एनालिसिस के या फिर प्रोक्सिमेट एनालिसिस के जो भी रिजल्ट हैं उनकी मदद से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कहना क्या चाहता है कि कोयला हो या कोई भी फ्यूल हो, उसको लेबोरेटरी में हम उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में रख के उस कोयले का क्या कर सकते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन कोयले के केस में दूसरा मेथड भी है जिसकी मदद से आप उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैलोरीफिक वैल्यू के को पता करने के लिए आपको कोयले का अल्टीमेट एनालिसिस और प्रोक्सिमेट एनालिसिस का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको जो है तो आप एक फॉर्मूले में पुट करिए और उसके बेसिस पर आप उसका कैलोरीफिक वैल्यू कोयले का निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी कैलोरीफिक वैल्यू निकाला जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोयले का, ना कि अदर फ्यूल्स का। अदर फ्यूल्स का जो है तो हम
लेबोरेटरी में कैलकुलेट करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में रख के, ठीक है। अब अल्टीमेट एनालिसिस हमें क्या क्या बताता है, कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐश एंड मॉइस्चर, ठीक है। What do we get from the ultimate analysis? We get under all these things from the ultimate analysis. As you will say, sir, this is the approximate analysis. Don't worry about that, just read it. Okay. Now, the substance which produce heat when a fuel burns are chiefly carbon and hydrogen and sulfur. Okay, so which of the things in the which are present in the coal, which out of which out of that which of the things are helping the coal to produce heat? That is, it is the carbon, hydrogen and sulfur. Okay, they basically help the coal to produce heat. अब ऐसी कौन सी चीजें हैं कोयले में मौजूद जो कि हीट प्रोड्यूस करने में मदद करनी है जलने पर? तो वो है कार्बन. So oxygen is like a person. Whenever it sees a good man, then it will just cross the line of that person and make him distracted, okay, and not making him to produce any type of heat. Such a bad person oxygen is. Moisture. Okay, अब जो मॉइस्चर मौजूद होता है कोयले में वो क्या करता है, टुगेदर विद दैट प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑक्सीजन प्रेजेंट. अब जो मॉइस्चर मौजूद होता है आपका कोयले में, उसके साथ ही जो मॉइस्चर आपका ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है उसके कारण जो मॉइस्चर जनरेट हो रहा है वो वाला भी, वो क्या करते हैं, वो आपका भाप में कन्वर्ट होने लगते हैं. और जो मिनरल होता है, मिनरल मैटर होता है या फिर जो भी ऐश होता है, वो क्या होता है, एक प्रकार का नॉन प्रोड्यूसर होता है हीट का, ठीक है. तो इसके बेसिस पर देखिए अब ये क्या बोल रहा है, अब यहां पर कहना क्या चाहता है, ठीक है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, दैट व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू से. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू से दैट वी हैव given the basically we have given the grades of the coal, we have decided the grades of the coal, or basically we have decided the grades of the non coking coal on the basis of the useful heat value which is present in the which can be found in the with the help of the calculated from the results of the proximate analysis, or with the help of the calorific value present in the coal. Basically useful heat value, what is useful heat value? The heat produced from the coal. Okay, the heat produced from the coal which is useful for that particular work. What do you mean by useful heat value? The heat which is produced by the coal which would be useful for that purpose. Okay, for the particular purpose, that is the for producing the heat. That means you have to calculate the heat, and for that heat you have to calculate the calorific value. Now coal is the only fuel which has two methods for calculating the calorific value. That is by putting it in the laboratory in the bomb calorimetry meter, or you can calculate it by using the formula also with the help of the results which you have gained from the ultimate or the approximate analysis. Okay, the second thing is that, as I have said, government has decided the government has decided the grades of the coal on the basis of the heat produced by it, useful heat produced by the coal. Okay, so which are the things which are present inside the coal that will help it out to produce heat? Okay, so that means there are some substances which are present inside the coal that will help it out to produce the heat. That is the carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, ash and the moisture. So which of the following things help the coal to produce heat? That is, the carbon, hydrogen and sulfur are the only matter or the only elements which are present inside the coal that will help it out to produce the heat. But in the case of hydrogen, there is a loss of heat somewhere due to the presence of oxygen. Okay,
So have you understood why the government is focusing on these things also? Okay, for calculating the useful heat value, they are considering these conditions also, that due to these conditions there is a loss of heat, or sometimes there is a boost in the heat, or the heat may increased produced by the coal. Okay. Okay. Similarly, if the moisture is present inside the coal, or when the oxygen reacts with the hydrogen, then in that case that moisture will evaporate, and if that moisture will evaporate, then in that case it will take the heat of the coal and run away of the screen. That means there is less heat produced by that coal. Okay. Okay. Clear? Clear. Now, next. Now we have to find the grade of coal. We have to find the grade of coal. That means we have to calculate the useful heat value. And for calculating the useful heat value, the formula which is given by the government of India is the 8900 minus 138 A plus M. What do you mean by A plus M? Where A represents the as percentage and M represents the moisture percentage. Okay, the SI unit of the UHV, useful heat value, is kilocalories per kg. Now, how will you do the calculation? It is given by the government of India. That is, if the नॉन कोकिंग कोल कंटेन्स लेस देन 2% मॉइस्चर, अगर नॉन कोकिंग कोल में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया, जहां पे ए और एम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एश परसेंट और मॉइस्चर परसेंट. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है, अगर नॉन कुकिंग कोल में 2% से कम मॉइस्चर है और 19% से कम वोलेटाइल मैटर है, तो जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी फॉर्मूला के द्वारा, ठीक है, हमें इस फॉर्मूले में जो भी देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास दो कंडीशन है. You have two conditions on the basis of which we will take the example and we will understand how this formula has to be used or applied, okay, according to the government of India, to calculate the UHV and find out the grade. Okay, so first condition, less than 2% moisture and less than 19% volatile matter. This is your first condition. And the second condition, for every 1% volatile matter below 19%, and that gives the actual UHV. नहीं, वन, ठीक है. So now first condition is from here to here, the second condition is from here to here. Okay, and the thing which you have to do is here. Now, if the percentage of less let volatile matter percentage is 17%, the percentage of volatile matter is 17%, and the percentage of moisture is 1.5%, then in that case, and the percentage of ash is what will be the percentage of ash? What should I take? 5%, just take it 5%. And what will be the grade of the coal? So just find out the grade of the coal using, first of all we have to find the useful heat value. So UHV is equals to
8,900 minus 138, 5 plus 1.5. Okay, so calculate it. What will be the UHV? What will be the UHV? UHV क्या होगा यहाँ पर? It is 8003 kilocalories per kg. Per kg. Is it the right answer? Is it the right answer? No, this is not the right answer. What is said over here? That is from the value calculated. Okay, if the coal contains less than 2% moisture and less than 19% volatile matter, from the value calculated above. Okay, similarly, we have calculated the value by putting the moisture content and the ash percentage. But the percentage of volatile matter here is less than 17%. That means it is less than 2% and it is less than 19%. Okay. It is satisfied over here. This condition is satisfied over here. Both the conditions are satisfied over here. Condition number 1 and 2. Okay. Both the conditions are satisfied. That means then it is said that then in that case subtract. It is said here that then if both the conditions are satisfied, then subtract 150 kilocalories per kg for every 1% volatile matter below 90%, 19%. So below 19%, what percent of volatile matter is there? 17%. That is, there is a difference of, what is the difference? There is a difference of 2%. And for every 1% and for every 1% below 19%, and for every 1% below 19%, you have to subtract it by 150. So that means you have to subtract by 300. So 8003 minus 300, that means 8000, sorry. So the correct UHV will be 7703. This is the correct UHV. This is the correct answer. For every 1%, for every 1% less than 19%, you have to subtract 150 kg, 150 kilocalories per kg if both the conditions are satisfied. आपका यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, तो उस केस में मतलब कि वह मॉइस्चर जो है तो 2% से कम है और वोलेटाइल मैटर जो है तो 19% से कम है। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उस केस में जितने 19% से जितने भी परसेंट कम है तो हर एक परसेंट के लिए, हर एक परसेंट का के लिए आपको जो है तो यूएचवी में कितना माइनस करना पड़ेगा? ओरिजिनल जो यूएचवी आपने कैलकुलेट किया है उसमें 150 जो है तो माइनस कर देंगे। तो 2% कम था तो 300 माइनस कर दिए तो 7703 किलो कैलोरीज पर केजी आ गया। Then in that case you don't have to do anything. This will be the right answer. If both the conditions are not satisfied, suppose that it is 1.5 and it is percentage of volatile matter is 20%, then you don't have to do anything. This is your right answer. This is your right answer. Okay, this will be your right answer in this case. Now if we talk about the different grades of coal, so there is
grades of coking coal, which is based on the ash content. Okay, grades of semi coking coal or the weakly coking coal, it is based on the ash content plus the moisture content. And the grades of the non coking coal, it is based on the gross calorific value. Okay, just remember this thing. The grades of different grades of coal are based on these things, you have to remember. Only 2 slides are left. Now you have to calculate the GCV, gross calorific value. Okay, the for calculating it, formula is given over here. So in gross calorific वैल्यू में हम क्या करते हैं कि जो मॉइस्चर है या फिर उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स कोयले में प्रेजेंट है, कोयले के अलावा जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सब का इस्तेमाल जो है तो हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं, है ना। आपका ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू क्या मान के चलते, जब भी हम ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे यूएचवी में क्या हुआ था, जब हम यूजफुल हीट वैल्यू निकाल रहे थे तो वहां पर हमने क्या किया था, हमने बोला था कि नहीं यार, ये चीज हीट प्रोड्यूस करती है, ये चीज हीट नहीं प्रोड्यूस करती है, इसके कारण हीट का लॉस होता है, इसके कारण हीट में जो है तो बूस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। as we were when we were calculating the useful heat value at that time, what we have seen that it is said that this thing produces heat, this will help to produce heat, and this thing will not help to produce heat. That means they have made a division that which of the following contents will or the elements will help to produce heat, and which of the following conditions or the elements or the contents are there which will not help to produce heat. Okay, but in the case of gross calorific value, it has said that don't worry about that. Everything, whatever is present in the coal, they will produce heat. They will help to produce heat. Okay. अब आपका इसमें क्या क्या बोल दिया कि भाई जितना भी प्रेजेंट है कोयले में वो सब हीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पर आपका जीसीवी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है, द सेकेंड डिफरेंस ग्रेडिंग का, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जीआई डिवाइड्स यूएचवी बैंड्स इन 7 बैंड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूजफुल हीट वैल्यू के बेसिस पे जो ग्रेडिंग की है उसमें सात ग्रेड दिए हैं, वहीं पे ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे जो आपका ग्रेडिंग किया है उसमें 17 ग्रेड बताए हैं, 17 ग्रेड्स में डिवाइड किया है, ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद दो इंटरवल रेंज है, ठीक है, वो बहुत ही कम है, मतलब दो ग्रेड्स के बीच का जो रेंज है ना, कि इतने से इतने तक का ये ग्रेड, इतने से इतने तक का ये ग्रेड, अगर जीसीवी इतने से इतने तक है तो ये ग्रेड होगा। तो ये जो रेंज है कि भाई 5 से 10 तक ये होगा, 10 से 15 तक ये होगा, ठीक है। द रेंज लाइक from 5 to 10 this will the grade will be this, from 10 to 15 the grade will be this, from 15 to 20 grade will be this range is very small in the GCV, this range is very small in the GCV. So it is beneficial for consumers as well as the suppliers, okay, to pay for the quality which they want, for the best quality which they want, and the best price. They could purchase the best quality of coal or according to the quality they required, okay. On the basis of this they can consume, they could purchase, as you can see over here, different grades. These are the grades.
grade 1, 2. This is the steel grade, and the washery grade has 6 grades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Like this, grading is done on the basis of the ash content. If the ash content is less than 15%, then it is a steel grade 1. If more than 15, that is, this is the range, 15 to 15 to 15 to 18%, 18 to 21%, 21 to 24. This is the range of grading. Okay. And for the coking and the grade, semi coking grade, grade 1 and 2, and not exceeding 19%, then it is ash plus moisture content, and 19 to 14%. As you will see, you may see this thing when I will upload the notes. Okay. This is the GCV bands. Total 17 bands are given over here, as you can see. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. This is the UHV range. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, on the basis of kilocalories. Okay, this is the USV range. To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.